Neeraj, you are audible. Neeraj, hello. नीरज, नीरज आवाज जा रहा है? हेलो नीरज। यस सर। हाँ, वेट करो, कुछ बच्चा लोग आएगा, ठीक है। सीएससी इलेक्ट्रिकल ठीक है सर। इसी, ठीक है। इसके बाद तुम लोग लंच में चले जाना, फिर मैकेनिकल और सिविल को इंटर करेंगे इस क्लास में, ठीक ओके है। सर। क्योंकि अभी देखो ये एग्जाम आने वाला है ना। और हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आधा पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक है। रोहित रोहित कुमार आ गया इसी का, ठीक है। तो I think Rohit Kumar, you are absent in my previous class, means yesterday. Yes sir, I was absent because सर उस दिन कंप्यूटर क्लास था इसीलिए। Okay, okay, okay. Just a minute. Some of the candidates they enter. Now maximum candidates. Manish Kumar, okay, Jisan Ahmad, Muskan Dubey. Just wait. Priyanka Kumari, CSE, Angelika Kumari, Subhasini. Only mechanical, sorry, CSE, electrical and ECE branch student can enter in this class. After completion of your class, mechanical and civil will join. तुम लोग थोड़ा आगे चल रहे हो सिलेबस में, वो लोग से, इसीलिए जो है वो लोग को अलग टाइमिंग रखे हैं, नहीं तो इसी टाइम में हम इंटर, ठीक है ना। और कोई बात नहीं उनका। दे आर नॉट टीच लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, बट यू आर ऑलरेडी नो अबाउट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यू नो, है ना। सो एंड मैकेनिकल सिविल ब्रांच does not know the Lorentz transformation equation. So today we are discussing about after completion of Lorentz transformation. According to the Lorentz transformation equation, we are just with Vinit Kumar Sahu. We are discussing about length contraction. Length contraction. This is Kumar Gupta. Okay. Now, length contraction. So here, Vinit Singh, unmute yourself. Yes. Just a minute, Manish Kumar and Saroj Kumar. Prakhar Gupta. So in this class, we have discussed about here length contraction. Length contraction. After the completion of Lorentz transformation, there is a tail part. Tail part of Lorentz transformation, which deals about length contraction and time dilation. Means if in Lorentz transformation we are taking two frame of reference. Two frame of reference, and one is fixed and another is moving with the velocity v. So according to that diagram, we have draw a diagram for length contraction. Length contraction. In between, in here, the same diagram I have drawn, and in this diagram we are placed. I have placed a rod in both the frame of inertial frame of reference. Now, so start today's class length contraction. So according to this diagram, we can say that two coordinates coordinate system S and S dash are the two. Hello sir,
बोल रहे सर अटेंडेंस का टाइमिंग आज का मैं 1:20 से 2:10 तक है सर। तुम लोग 1:20 से अटेंडेंस बना देना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है ना? अटेंडेंस 1:20 से बना लोगे, क्योंकि 12:20 से ले नहीं रहा था टाइमिंग LMS पोर्टल में। अच्छा इसलिए 1:20 कर दिए, तो तुम लोग 1:20 में बना देना सभी को। क्या ठीक है कर सर। लो, मैकेनिकल सिविल को 1:20 से क्लास लेंगे, क्योंकि उनका सिलेबस तुम लोगों से पीछे है, इसलिए एक साथ इंटर नहीं कर सकते। समझ में उन लोगों को कुछ भी नहीं आएगा ये बात, ठीक है? 1:20 से अटेंडेंस बना लोगे। नाउ we consider two coordinate system S and SD. The latter moving with a velocity v relative to the former along the x direction. In Lorentz transformation equation, same thing is to be given. So let suppose a rod here, this is a rod. This is a rod. Here for S frame of reference, there is a rod. So if a rod be placed along as this frame of reference, inertial frame of reference, along x axis, along this x axis. If x1 days, here I have written x1 days and another x2 days. Another means the end of this rod, just a minute. The initial end of this rod to this to the origin or as this frame of reference is suppose x1 dash, and here the end of this rod, here last end of this rod to the s dash frame of reference, the distance is suppose given here x2 dash. So you see in this diagram, here I have draw a line from as this frame of reference to the initial part of this rod. So the distance is x1 dash, and last end of the this rod is to the as this frame of reference is x2 dash. So if x1 dash and x2 dash are coordinates of the axis of the ends of the rod, then its length can be written in the form of L dash is equal to x2 dash minus x1 dash. The length of the rod regarding the S dash frame of reference, we are taking L dash. So here L dash is equal to x2 dash minus x1 dash, means here last end minus initial end of this rod. So this is equation 1, L dash, the value of L dash. Now again we are talking about this S frame of reference. Let an observer in S inertial frame of reference measure the length of the same rod. Here same rod will place in S dash frame of reference. So if x1 and x2 for this S frame of reference, so if x1 and x2 are the coordinates of FCR of the ends of the rod, then its length L can be written as L is equal to x2 minus x1. Here equation 2. From Lorentz transformation, we know that x2 dash is equal to x2 minus dt divided by root under 1 minus b square divided by c square. Yesterday I have calculated this value. So, and for x dash, the value can be written as x minus dt divided by root under 1 minus b square by c square. Both the equation here,
both are taken as a equation 3. Now, on putting the value of equation 3 in 1, equation 3 का value को 1 में put करेंगे. So, in place of L dash, we can write here L dash is equal to x2 dash. So, here x2 dash is given, the value of x2 dash is given here. So, this value can be written in this place, minus, here minus sign is given here. So, here I have written minus x1 dash. So the x1 dash, the value of x1 dash is x1 minus bt divided by root under 1 minus b square by c square. So this part is written here. So L dash is equal to, we are taking root 1 minus root under 1 minus b square by c square as a common LCM. So इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा, x2 dash minus bt minus here minus x1 and this minus and minus plus bt, then bt and bt will cancel. So L dash is equal to x2 minus x1 divided by root under 1 minus b square divided by c square. So according to equation 2, we can say that x2 minus x1 is equal to L. So here in place of x2 minus x1, we can write only L. So this L dash is equal to here L divided by root under 1 minus b square by c square. Here I have written since L is equal to x2 minus x1 from equation 2. So this is the length contraction part of the Lorentz transformation equation. Again, I will repeat these things. S and S dash are the two coordinate systems. S dash frame of reference moving with a velocity v relative to S along the x-axis. Here there is a rod is placed in both the inertial frame of reference. So we are talking first about S dash frame of inertial frame of reference. If x1 dash and x2 dash, here look my cursor, x1 dash and x2 dash are coordinates of the abscissa of this ends of the rod. So its length L dash is equal to, we can write x2 dash minus x1 dash. Here this is equation 1. Now let an observer, we are talking about this S inertial frame of reference. S inertial frame of reference, if x1 and x2 are the coordinates of abscissa of the ends of this rod, so we can write L is equal to, according to this diagram, L is equal to x2 minus x1, that is equation 2. Now from Lorentz transformation, we know that x2 dash is equal to x2 minus bt divided by root under 1 minus b square divided by c square, and x1 dash is equal to x1 minus bt divided by root under 1 minus b square by c square. So both of these are taken as equation 3. So on putting the value of equation 3 in 1, so in equation 1 states that L dash is equal to x2 dash minus x1 dash. So the x2 dash, the value of x2 dash is this minus x1, the value of x1 dash is here given here. So L dash is equal to LCM or root under 1 minus b square divided by c square. So here rest part is x2 minus b2 minus x1. Here minus and minus plus vt. Vt will cancel. So L dash is equal to x2 minus x1 divided by root under 1 minus b square divided by c square. So L dash is equal to L, because in equation 2 we can write, I have written L is equal to x2 minus x1. So here in place of this x2 minus x1, I have written L. So L is equal to L dash root under 1 minus b square by c square. This is the formula of length contraction. And similarly,
we are calculating time dilation. Time dilation. So suppose according to the special theory of relativity, time interval are also affected by the relative motion between the frame of reference and reference frame S here. S dash reference frame S dash is moving with a velocity v along this f axis. Suppose at any instant here, suppose at any instant these two reference frames coincides at t is equal to t dash is equal to 0. We know all these things. So the observer in this as this frame note that time taken by the observer according to this frame days inertial frame is t2 days, and for s inertial frame of reference is t1 days. So in according to Lorentz transformation we know that t1 dash, ये हम लोग जानते हैं ना लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर t1 dash इज इक्वल टू ये होता है, याद करो पिछला कल का क्लास, पिछला तो बीता हुआ दिन था, कल का क्लास में ये आया था t1 dash, जो कल का क्लास समझा वही आज का क्लास को हैंडल कर पाएगा, अदरवाइज समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। t1 dash is equal to t1 minus vx divided by c square divided by root under 1 minus v square divided by c square. t1 dash का वैल्यू उसी तरह हम t2 dash for inertial frame as this, the time is suppose t2 dash, so t2 dash is equal to we can write t2 minus vx divided by c square divided by root under 1 minus v square divided by c square. So suppose this is again equation 1. If t dash be the here in this as this inertial frame of reference, if t dash delta t dash, here I have written delta t dash, delta t dash be the interval of time assumed by the observer in this as this inertial frame of reference. Delta t dash be the interval of time, means there are two time interval. Here I have already given t1 dash and t2 dash. These are the two time are given here. So delta t dash be the time interval assumed by the S dash frame of reference. We can write delta t is equal to t2 dash minus t1 dash. Equation 2. Delta t dash is only valid for S dash frame of reference. Similarly, if we are taking in place of delta t dash for S frame of reference, we are taking delta t. Here for S dash frame of reference, we are taking delta t dash, and for and for S inertial frame of reference, the time interval should be suppose delta t. So interval observer in this S frame of reference, we can write delta t time interval is equal to t2 minus t1 for this S inertial frame of reference. Again here we are getting equation 3. Now on putting the value of equation 1 into, on putting the value of equation 1 into, means the value of t1 days and t2 days is put in this equation 2. So delta t days, here I have written delta t days is equal to t2 days, that value of t2 days is given here. So this value is written here, means t2 minus dx divided by c square divided by root under 1 minus b square divided by c square, minus, here minus is given here, so here minus I have written, the value of t1 days is given here, so this value is put in this place. So again solving this part,
we are taking LCM root under 1 minus v square divided by c square. So here rest part is T2 minus Vx divided by c square minus T1, then this minus and minus will plus Vx divided by c square. So here Vx divided by c square, positive and negative will cancel. So rest part is T2 minus T1. So here according in equation 3, we are assumed that delta T is equal to T2 minus T1. So here uh, T2 minus T1, in place of this, we can write delta T, only delta T. So here I have written delta T dash is equal to delta T root under 1 minus v square by c square. For length contraction and time dilation, for length contraction, this part is arrived, this part is come, L dash is equal to L root under 1 minus v square divided by c square, and T dash is same part. In place of L, we can write delta T divided by root under 1 minus v square divided by c square. Length contraction and time dilation. Those who are knowing about the Lorentz transformation in your from previous class, that candidate is only remember all these things. Otherwise, हाँ ठीक है, क्लास अटेंड किए, इसी तरह होगा. ऐसा नहीं करना है. क्लास रेगुलर अटेंड करोगे तभी समझ में आएगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन. Lorentz question in university will ask, find out an expression for Lorentz transformation or find out an equation of Lorentz transformation. 10th पार्ट में क्या देगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन के बारे में लिखने बोलेगा. कोई एक पार्ट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन दे या टाइम डायलेशन दे, ओनली वन पार्ट विल बी आस्क्ड. सिर्फ हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को करने, सॉरी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को करने से नहीं होगा, हमको इसके साथ साथ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन, इसको भी करना होगा, याद करना होगा. नेक्स्ट पार्ट इज इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, एंड दिस पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम. This part is very much important for your university exam and for your further semester also. So equivalence of energy, mass and energy means we have to prove E is equal to mc square. We all know that E is equal to mc square, but how it is proved? So let's start discuss about this equivalence of mass and energy. We know that energy is defined into work and the force as the rate of change of momentum. So here F is equal to d by dt m into b. F is equal to m into a. Okay. So here m into a, in place of a we can write F is equal to d by dt m into b, equation 1. According to the theory of relativity, the mass and velocity are variable. Mass and velocity are variable. So here F is equal to, this F is equal to m into dv by dt plus v, mass and variable both are mass and velocity both are variable. So according to this we can write F is equal to m into dv by dt plus here v dm by dt, equation 2. When force F is acting on a particle, so in that case particle is displaced through a distance, suppose dx. Then increase in kinetic energy, decay, can be written as decay is equal to F into dx.
फिर से बोल रहे हैं इस पार्ट को। हम लोग क्या जानते हैं, हिंदी में बोल रहे हैं सबको समझने के लिए इस पार्ट को। एफ वर्क और फोर्स को हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के रूप में हम इस रूप में लिख रहे हैं इक्वेशन 1 में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर मास और वेलोसिटी वेरिएबल होता है। तो इक्वेशन 1 को वेरिएबल होने के चलते F इज इक्वल टू एम dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। इक्वेशन 2, हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? Yes. नो सर। तो ठीक है, आगे स्टार्ट कर रहे हैं फिर। हाँ सर। After completion of this equation 2, there is a language, and the language is when F force is acting on a particle. Suppose कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल में F फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो जब F फोर्स अप्लाई किया गया तो पार्टिकल क्या होगा, अपना जगह से दूसरे जगह में डिस्प्लेस होगा। अपना जगह से दूसरा जगह गया, डिस्प्लेस हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा कि पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया, और वो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख रहे हैं यहां पर डीके के रूप में। ठीक है, पार्टिकल में व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन द पार्टिकल, पार्टिकल डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस dx, then increase in kinetic energy dk can be written as dk is equal to F into S. F into S. F into S displace part is dx. Now this is equation 3. On putting the value of equation 2 in 3, means the value of F is put in this equation 3. So here dk is equal to F. The value of F is given in equation 2. So equation 2 can be written here. And dx, so dx will multiply in both the parts, means F m dv by dt into this dx here plus v dm by dt into, again we will multiply dx. Okay, now we know that dx by dt is equal to v. ये होता है dx by dt is equal to v, velocity. Velocity equal to distance by time. If dx is distance and dt is time, so here dk is equal to m. In place of dv we can dx by dt, in place of dx by dt we can write v, and here dv plus v into dx by dt. In place of this dx by dt we can again write v. So v into this v square into dm. This is equation 4. Now we know that the variation of mass with velocity is m is equal to m naught root under 1 minus v square by c square. ये स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से आ रहा है, आइंस्टाइन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से। m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट। इसको सॉल्व किए तो क्या आया, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। इस पार्ट को सॉल्व करने पर यह आया। सो हियर वी आर गेटिंग इक्वेशन 5. So squaring both sides of equation 5 means m square is equal to m naught square, and this c square will go multiply with this m naught. So m square is equal to m naught square into c square divided by c square minus v square. ये पार्ट स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड्स में। इन इक्वेशन 5 स्क्वायर करने पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में m है, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट मींस m नॉट स्क्वायर। नीचे क्या है, c स्क्वायर ऊपर जाएगा रूट अंडर c स्क्वायर, तो सिर्फ बचेगा यहाँ c स्क्वायर रूट हट जाएगा डिवाइडेड बाय ये रूट हटेगा तो क्या है c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर. So this part can be written as again m square will multiply with this c square minus v square. So here m square c square
minus m square v square is equal to m naught square c square. So differentiating this equation mc square c square minus m square v square is equal to m naught c square, we are writing this equation c square 2m dm minus v square 2m into dm minus here c m square 2v dv is equal to 0, c square dm minus here v square dm minus m into dv v dv is equal to 0. अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, इसके बाद कंप्लीट करेंगे ये, क्योंकि इधर 2m 0/2m इज इक्वल टू 0, तो c स्क्वायर dm इज इक्वल टू, इसको सजा के लिखेंगे तो क्या आएगा m dv m v dv प्लस v स्क्वायर dm, इक्वेशन 6. तो इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 6 दोनों का हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड में दोनों का सेम वैल्यू है, m dv m v dv plus v square dm. Here in equation 6 same value are obtained. So equation 4 and equating equation 4 and 6, so dk is equal to this part c square dm. So equation 7. Now first when we apply a force, before applying a force the body is to be at rest condition. So now when the body is at rest initially, when the force acts, the body acquires a velocity v. The mass of the body increases from m naught to m. Here we are taking mass m naught. When the body when the body acquires a velocity v, then its mass changes from m naught to m. यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे हम इस लाइन के बाद, इक्वेशन 7 के बाद इस पार्ट को. Equation 7. After equation 7, we are writing a language, and the language is this. Now, when the body is initially at rest, when the force acts on the body acquires a velocity v, the mass of the body increases from m naught to m. So the total kinetic energy, of the body can be written as integrate dk is equal to m naught to m, mass vary किया, c square dm, or it can be written as k is equal to c square m minus m naught, equation 8. The total kinetic energy of a moving body or particle is the sum of kinetic energy of motion and the energy is at rest condition. Total energy means when the particle is in motion and energy is at rest condition. So total energy is equal to k plus m naught c square. K is the energy. Okay, m naught c square. Velocity. Here E is equal to k plus m naught c square. Now the value of k is given in equation 8, and so this value of k is put in this equation. So E is equal to here c square m minus m naught plus this m naught c square, or E is equal to c square m minus m naught plus m naught. Here c square is taken as a common, so rest part is m minus m naught plus m naught, or E is equal to c square m minus m naught plus m naught, means m naught positive and negative plus minus, so both are cancelled. So E is equal to c square into this m. E is equal to mc square. ये हमारा प्रूव हुआ, E is equal to mc square. ये पूछता है, is there any doubt in this equivalence of mass and energy?
हेलो अबुल, कोई डाउट है? हाँ जिशन बोलो। हेलो सर इक्वेशन इक्वेशन 2 में क्या है सर? F इक्वल टू एम dv बाई dt प्लस v dm है सर, dm है वो। हम बता रहे हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो? हाँ सर, वो इक्वेशन 6 एक बार बता दीजिएगा ना सर। ठीक 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 है, दोनों क्वेश्चन को बता रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन 2, ये पार्ट। इक्वेशन 1 के बाद यहां हमारा लैंग्वेज रहेगा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास एज वेल एज वेलोसिटी आर वेरिएबल। mass and velocity are variable, so this f is equal to f, यहां लिख दिए, m into dv by dt प्लस ये v लिखे, ये v, यहाँ क्या बचा, dm by dt, mass and velocity both are variable, so this equation 2 can be will be right. ठीक है जिशन? यस तो सर, जिशन यस सर, यस सर। ठीक। इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 ये पार्ट, गुप्ता शिशिर। सर वो, हाँ सर वो 2 लाइन ऊपर सर, और इक्वेशन 6 से 2 लाइन ऊपर सर। डिफरेंशिएटिंग, हाँ सर, इसके बाद यहाँ से ही हम बोल रहे हैं, यस सर। ठीक है। डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन है ना, सी स्क्वायर 2m dm माइनस यार सी डी स्क्वायर 2m dm माइनस m नॉट 2b db इज इक्वल टू 0, तो cm ये 2m सी स्क्वायर dm ये पार्ट माइनस v स्क्वायर dm माइनस माइनस v dv यहाँ पर लिखे है ना, इक्वल टू। सर ये v कहाँ से आया सर? v कैसे आया सर? यहाँ पर ना ये थोड़ा हम कैलकुलेशन लगता है कल गलत किए होंगे, देख लेंगे इसको, ठीक है, नोट्स में क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट हमारा सी, हम यहाँ 2m जो सॉरी 2m हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन अगर लेंगे, ठीक है ना, तो क्या बचेगा, कॉमन लेने से क्या होगा, ये 2m हमारा 0 से ये हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 0 आ गया, ठीक है, ये पार्ट आएगा, इसका कैलकुलेशन हम बना के दिखा देंगे। हाँ सर वो जो m नॉट स्क्वायर और c स्क्वायर का डिफरेंशिएट किए, तो वहाँ पे सर 2b आप लिख दिए शायद, तो वहाँ 2c होगा क्या सर? देख लेंगे, इसको देख लेंगे, बोल तो रहे हैं, इस पार्ट को देख लेंगे, कैलकुलेशन में कर ठीक रहे हैं सर, जी, ठीक है? सर, यस सर। इसके आधार पर हमारा इक्वेशन 6 आया। और कुछ किसी को डाउट है बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा। नाउ नेक्स्ट, चलो तब। हेलो सर। हाँ सर चैट बॉक्स में मनीष पूछ रहा है इक्वेशन 3 कहाँ से आया सर? अच्छा, ये इक्वेशन 3, ठीक ठीक ठीक। देखो इक्वेशन 2 के बाद हम यहाँ पर एक लैंग्वेज बोले, व्हेन फोर्स F इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस dx, देन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख रहे हैं डीके काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F इंटू dx, ये बोल सकते हैं हम। जब बॉडी मेरा रेस्ट कंडीशन में नहीं है, उसमें बॉडी में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी क्या होगा, डिस्प्लेस करा dx डिस्टेंस में, ये तो एनर्जी इज इक्वल टू F इंटू dx लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू WS होता है ना जी। हेलो हेलो मनीष, यस सर, होता यस है कि सर। नहीं? नहीं जानते हो तो वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर, इस चैप्टर को ट्यूसडे को हम क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये डाउट आ रहा है। देखो F इज इक्वल टू सर वो वर्क डन का फॉर्मूला है सर, W F इज इक्वल टू W F इंटू इक्वल एस। टू F। हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वर्क डन का फॉर्मूला है ना F डॉट dx। हाँ, W इक्वल टू F इंटू एस cos थीटा, 0 डिग्री और 80 डिग्री, यही तो है। उसी को सर आप काइनेटिक बोल रहे यहाँ हैं ना? हम काइनेटिक एनर्जी मान रहे हैं, ठीक है ना, उसको वर्क डन को, ठीक है।
हेलो शिशिर बोलो। अब नहीं। यस सर, समझ गए सर। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, डाउट सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना सर, वो डी के इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है dx सर। क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलो बोलो। dx जो बोले सर वो डिस्प्लेसमेंट है ना। ये dx ना, ये डिस्प्लेस है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है, डिस्प्लेस कर रहा। हम क्या बोल रहे हैं कि जब कोई बॉडी में कोई